Welcome back to Chasing the Target. India versus Ireland, the second T20. India फिर जीत गए, making them the winner of the series. Eventually, there's one more T20, but it really doesn't matter, right? हो गया series confirm हो गया. लोग जो जाने वाले वो भी थोड़ा बहुत confirm दिख रहा मेरे को in terms of at least जसप्रीत बुमराह की comeback. बहुत मजा आया देखने में. I think he pulled sensational. एक साल के गैप के बाद ऐसा डाल रहे बोले तो ऐसा लग रहा है रोज नेट्स खेल रहा था. Just taking his good time in recovery, and I think सबर रखने का पॉइंट रहता है आई थिंक फॉर एवरी प्लेयर एंड या पीट तो सही दिख रही है बॉय की एंड गेटिंग विकेट्स गेटिंग दोस इकोनॉमिकल लास्ट डेथ ओवर्स दैट वी नो हिम फॉर ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑन द यंग स्टार रिंकू सिंह आके छक्के मारा शिवम दुबे 2 छक्के मारा आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा आल्सो बहुत टाइम के बाद गायब हो गया था क्रिकेट से बट उन्हें भी जिस तरीके से आके आज आई थिंक एक ओवर में 2 विकेट निकाला था. So I think it's been a phenomenal performance. For whatever reason, again, it's Ireland. Whatever we can't take away the fact that it is a young squad, it is an inexperienced squad, and I think they performed spectacularly well. I am joined by Mr. Co-host. What are your expectations now of tomorrow? I think tomorrow के सवाल ज़्यादा बढ़ गए कि किसको लेना किसको नहीं लेना. Wow, you want to start with that? I'll first just talk a bit about this game. I think, like you mentioned, very impressive. The number 4 situation has been solved. Shivam Dubey is looking like Yuvraj Singh, the 2 sixes that he hit. But overall, आप जो बोले बहुत सही बात बोले कि देखो ठीक है आइलैंड है लेकिन conditions ये थोड़ा foreign है for these Indian players. And I think this is a good starting point. Of course, there's nothing to go crazy about or anything like that. But I felt Jasprit Bumrah as well. That's a huge positive that he's bowling more than anything else. I mean, he bowled really well, but more than anything else that he's bowling. I haven't seen him bowl for a year. Immense accuracy. I felt he captained the side well too. फिर अगर आप रिंकू सिंह आज जो मेरे को बहुत खुशी हुई हम लोग प्रेजेंटेशन में भी उसका इंटरव्यू देखे बहुत अच्छा दिखा. The way he batted as well. Very happy for him. Also Sanju Samson, we saw glimpses of him again. I expect much more from him. He should have got more manfires today. He should have got 80, 90 the way he was batting. That's what I'm a bit disappointed about because he's such a class player. But you need to improve in that consistency. Then you have Gaikwad. I felt he batted decently well too. Not a bad shout. Tilak Verma, the odd failure, that's fine. That's going to happen. He's a youngster, and that's why I'm not ready to fast track him into the Indian team. Even though we might see his name tomorrow, I'm not 100% with that because he is a young guy. He will learn from his mistakes. He's only 20 years old. अब देखेंगे क्या होता है. Ibrahim Bhai is saying, how are you guys? We're very well. Indian squad announcement, Indian time 1:30, which is 12 o'clock our time, Faiz. Aksar Chahal will get chopped and Ashwin coming in. Man, that is going to be a big call if Ashwin comes in. There's going to be a lot of debate. I'm very excited actually for this. आजकल ये हो गया कि more than the fixture itself, we're more, these kind of announcements get us going. It gives us a lot of content. It allows us to discuss a lot. And you asked me the question, what do you think is going to happen tomorrow? I'm really not sure, but there will be 1 or 2 calls that is going to cause a stir, 100%, because there will be players that we all agree on, but there's going to be 2-3 players that we don't agree on. And I don't know if you can answer this question. Why is it a squad of 17 and not 15? That means there's a big possibility that Iyer and Rahul will come in. But why is it a 17 squad? Can you answer that question? Or if Ibrahim Bhai knows the answer to that. What I feel is because Iyer is coming in and another Jasprit Bumrah, there's probably a possibility of having backups for them.
which is why बट I think आर there's यू a number of अलाउड दैट? 17. बिकॉज Yeah, yeah, नॉर्मली you क्या are. होता उसमें क्या होता 15 का स्क्वाड रहता, फिर आपका रिजर्व प्लेयर्स रहते, विच इज द बैकअप, लाइक यू कैन टेक अ ईयर और व्हाटएवर इन योर बैकअप, Yeah. बट हाउ कम इट्स अ 17 मैन स्क्वाड? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग So टू. if you look at Bangladesh's team and Nepal's team as well, it's 17. Both of them have 17 members in their squad. So I think for India also it's the same thing that two reserves will come in, and I think 15 will be the main who will go. So But two will again, be reserves. yeah, considering the fact also if we're going to go with Iyer and Pant or Iyer Pant, nahi, Iyer and KL Rahul or someone like that, then you will need a backup. Even Jasprit Bumrah is still touch and go. You still don't know कि भाई अभी उसके. I would say last T20 को light ले लो उसको, let him rest and just get to Sri Lanka safely. There's no need of Well, playing him. people have a different perspective on that, because I was reading a few articles. They're saying let him bowl as much as he can, because you need bowling rhythm, right, going into the World Cup. I know where you're coming from. I'm just putting it out there that, like, if you Yeah, flip the narrative, it's because he hasn't played for a year. Of course, you're scared बिल्कुल. that he's going to get injured, but if he's going to get injured, it's better that he's in rhythm, Before right? So the maybe, yeah. yeah, I mean that's another way to look at it, because it's just one T20 phase, and then after that it's the Asia Cup. Asia Cup तो उन्हें खेलना ही वाला है. So how do you look at it like that? Do you really want him to rest, or do you think that maybe एक गेम में चल जाएगा बोल के? मेरे हिसाब से देखो मैं रेस्ट कराऊंगा बिकॉज अगेन लाइक यू सेड एक साल से नहीं खेला फिर भी रिदम में तो दिख रहा बॉस ने. He's bowling exactly like he left us, almost exactly like he left us. Maybe a few here and there, but मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कर लेना चाहिए. Not to get too excited too quickly बोलते ना. अगर हाँ. आप क्लास के बने हुए हैं, आई मीन आप एक साल के बाद खेल रहे हैं, आप 8 ओवर डाल चुके ऑलरेडी और आप फैंटास्टिक डाल चुके, आपका स्विंग देख लिए, आपके बाउंस देख लिए, आपका पेस 140 टच कर रहे हैं, आप एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ. So I would say just as a precaution, you can land in Sri Lanka. You can always do more nets. You can do more nets to get back in rhythm. It's okay. You can probably even have a small, match amongst your own teammates or something like that to create the aura of like a match feel. But just T20 again, it's not going to make a difference for him. He has to bowl 10 overs. That will only come through net practice. अगर आप 4 ओवर इधर डाल दियो तो ज्यादा आपको वैसे भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. आयरलैंड जिस तरीके से अगर आप स्पिन इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ही इज इवन मेकिंग गुड कॉल एज अ कैप्टन. तो कैप्टन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं निभाना पड़ेगी उनको. तो मे बी ही लाइक ही वोंट प्रॉब्ली नीड इट, बट इट्स जस्ट माय वे ऑफ लुकिंग एट कि भाई रेस्ट करा लो भाई. कहीं को अगर मालूम ये टूटने वाली चीज है तो थोड़ा होल्ड करके अगर आप रेस्ट दे सकते हैं. श्रीलंका में फिर आप वैसे भी ट्रैवल करना है आपको, फिर अगेन आपका जिस तरीके से बॉडी क्लॉक चल रहा है अभी वो भी अलग रहने वाला है. तो मेरे हिसाब से भाई जसप्रीत बुमराह शुड रेस्ट द लास्ट वन. एंड कल 1:30 अगर अश्विन आया दिमाग खराब हो जाएगा मेरा. तो अश्विन आना ही नहीं अश्विन. अश्विन मेरे हिसाब से भी नहीं आना चाहिए, मगर रोहित शर्मा का बॉय है. मेरे को याद है जब इवन विराट कोहली जब कैप्टन था 2021 में, वो टाइम पे रोहित शर्मा वाइस कैप्टन था, एंड ही हैड अ से इन दैट सिलेक्शन फॉर द T20 वर्ल्ड कप, उसमें अश्विन को लिए थे. फिर 2022 में जब रोहित शर्मा खुद कैप्टन था, अश्विन को लिए थे. तो चांसेस तो है, लेकिन मैं भी भाई नहीं खुश हूँ उसके साथ. वनडे खेला ही नहीं यार. लास्ट मैं सहमत हूँ आपके साथ, T20 में भी नहीं लेना वनडे. आई एग्री विद यू 100%, लेकिन चांसेस उन्हें पहले हो अपना सकते हैं. YouTube चैनल चला रहा है, उसको चलाने दो. उसको मिलियन सब्सक्राइबर आए बैगन को, उसको क्या है. हाँ WTC का अगर सवाल उठता कि भाई उन्हें WTC खेलना नहीं खेलना, जब का वी कैन अगेन डिबेट बैक जडेजा बैटिंग, वो तो खेलना था उसको. ये सिचुएशन में आई डोंट थिंक ही शुड कम बैक. Magar, one question that I had on Bumrah, like you saw him in these the 8 overs that he bowled. Was it 8? Yeah, I think it was 8. But what did you think of him? Like, सही दिख रहा rhythm wise, everything wise. Forget the opposition, but उसका run up, उसका action और everything. हाँ, मैं उसका पेस नोट कर रहा था. 137, 136, a few balls, then 141. He was not bowling all 140. He wasn't trying to पूरा full tilt नहीं है. पूरा full tilt नहीं है उसका. Run up I think more or less the same है, but again conditions were favoring him. Movement मिल रहा था उसको, bounce. He was bowling good line and length. ज़्यादा wide कुछ नहीं दिखा उनके तरफ से. And he was making also कैप्टन के हिसाब से भी अच्छे कॉल्स दिए जब स्पिनर को इंट्रोड्यूस करके वो विकेट्स लेना शुरू कर देते फर्स्ट T20 में. तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगेन यू कांट से कंप्लीटली कि भाई उन्होंने फुल टिल पे तो नहीं दिखे बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें एक साल के बाद खेलने आ रहे हैं. बट मेरे हिसाब से आई थिंक अभी तो अच्छा दिख रहा है. और अगर आगे भी देखना है तो थोड़ा होल्ड कर लो बॉस. एक T20 होल्ड कर लो, पूरा खेलने की जरूरत नहीं है आपको. ऋतुराज को कैप्टनसी दे दो, वो खुद एशियन गेम स्क्वाड लीड करने वाला है. तो आप ऋतुराज को कैप्टनसी दे दो, आप रेस्ट कर लो, आप नेट्स डालो भाई, आप नेट्स करो, आप रिलैक्स करो. अभी आप अच्छे 8 ओवर डाल दिए. 8 ओवर एक ODI के लिए तो सहमति है कि भाई बंदा ये डाल ले पाएगा.
Yeah, like I mean, it's always good to have a different perspective, because what I've been reading, hearing from different experts and experts are saying, even like the likes of Shoaib Akhtar, Wasim Akram, they're saying that like bowl as much as you can because you haven't bowled, especially match practice आपका नहीं हुआ, तो अगर आप रिदम में आप fully fit है तो आप खेलो, because वैसा भी अगर आप इंजर अब आप होने वाले मैच हैं, प्रैक्टिस का बोल रहे हो, चलो मैं बिकॉज समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं आप नहीं, बिकॉज उन फर्स्ट टी लोग बोल रहे हैं कि 20। अगर आप इंजर होने वाले हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसा टूटने वाले, तो फिर आयरलैंड के अगेंस्ट भी आप नहीं खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 ओवर खेलेंगे, वहां पे भी आप टूटेंगे इफ यू आर नॉट एज अ बॉलर, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू आर स्टिल वरीड अबाउट योर इंजरी, देन आज नहीं तो आप कल इंजर हो जाएंगे वैसा। मगर अगर आप रिदम में आप फुली फिट है, अगर आप वर्ल्ड कप जा रहे हो, तो आप जितना भी मैचेस खेल सकते खेलो, ये उन लोग का पर्सपेक्टिव है, एंड लाइक बिल्कुल। अच्छा, आई डोंट अब थिंक एक देयर इज एनी राइट पर्सपेक्टिव और रॉन्ग। अब हाँ, एक पर्सपेक्टिव ये भी ले लो, आप फर्स्ट 20 T20I में अगर इंडिया बॉलिंग नहीं करती और बैटिंग करती, फिर बारिश होता तो क्या करते थे? और अब आज बारिश नहीं हुई, थैंक गॉड। अब अगर नेक्स्ट में बारिश मगर हुई तो फर्क वो पड़ने वाला आपके है कि नहीं? हाथ में नहीं है, ये हाँ, आपके हाथ हाथ में में नहीं। है, रेस्ट हाँ ये आपका। हाँ, मेरे हिसाब से क्या है, एक साल ही इज टेकन। मेरे को बस ये है कि भाई श्रीलंका तक पहुंच के, बिकॉज यू नीड दिस गाय, लॉन्जिविटी में यू नीड दिस गाय। मगर आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली एग्री, 30% ऑफ द टीम है, मैं भी या मैं भी मान रहा हूँ ये बात, आप नई मगर गाड़ी लेते कि मार मार नहीं कर सकते बड़े नहीं भाई। मगर एक्टिवा एक्टिवा नहीं है जसप्रीत बुमराह के, आप नहीं, मैं लेके समझ गलियों सकता में हूँ, घुस के मगर डालते मगर रहते। उन्हें, अगर मैं उसके हिसाब से देख रहा हूँ, राइट, अगर मैं जसप्रीत बुमराह हूँ, इफ आई एम हम्म, नॉट गोना प्ले दैट 30-20, दैट मींस समवेयर डाउन द लाइन आई एम थिंकिंग आई एम नॉट फुली फिट, आई एम अ बिट स्केयर्ड, आई एम गोना गेट इंजर्ड, एंड नाउ दैट देन एशिया कप में भी फिर मैं 10 ओवर डालना है वहां पे, अगर आप यहाँ पे कोलैप्स होंगे 4 ओवर में, फिर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटेंसिटी, प्रेशर, ये वो सब, वहां पे अगर इंजर हो गए तो फिर आप क्या करेंगे वैसा, बिकॉज इन माई ओपिनियन there is more हम्म। chance of him getting injured in the Asia Cup than in this last T20 Yeah, if he's not करेक्ट। fully fit, you know. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी काइंड ऑफ थिंग, मेरे को आयरलैंड में कहीं इंटेंसिटी दिख रहा नहीं है। एक माहौल है, दोस्त खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लाइक इतना कुछ सीरियस भी नहीं है। But it चार gives ओवर him डाल रहा, it इट गिव्स gives देम him that, प्रैक्टिस, इट गिव्स देम but it gives him, प्रैक्टिस। yeah, हाँ, it इट gives गिव्स him देम that प्रैक्टिस, feel, मैं right, of समझ the सकता game. हूँ, इट गिव्स देम फील। बट लाइक आई वुड रादर लाइक आई डोंट नो, मेरे हिसाब से पीठ को मद्देनजर रखते हुए दो मैच खेल लिया, फुली फिट पे खेल लिया, फुली टिल्ट में खेल लिया, एक बिठा दो श्रीलंका में, डायरेक्ट उतारो उसको, उसके उसको बॉक्स में डालो, उसके अंदर तकिए डालो, उसके अंदर पूरा रैपिंग करो, और बुमराह को बस श्रीलंका भेज दो आप लोग। बिकॉज यहाँ पे आके इंजर होने वाली चीज तो कहीं भी होंगी, बिल्कुल वो बात सही है। आयरलैंड में हो गई तो अच्छा है, पर पहले मालूम होगा। लेकिन क्या है, फिर कल आपका अनाउंसमेंट है, अगर परसों इंजर हो गया तो फिर आपका अनाउंसमेंट फिर डिले हो जाएगा। जैसे आपका वर्ल्ड कप का स्केड्यूल इधर से इधर होते जा रहा, वैसे आपकी एशिया स्क्वाड इधर से इधर होते जाएंगी फिर। एंड आई डोंट नो, मे बी अब यू आर अच्छा, राइट आल्सो, अब बट ये मेरे बात हिसाब बताओ से मेरे, अब अभी आई मेरे को वुड ये नॉट। बात, लास्ट थिंग, अब फिर नहीं बात करूंगा इसके बारे में। लास्ट थिंग, अभी एशिया कप उन्हें फुली चले गया, हम इंशाल्लाह अगर उन्हें पूरे हाँ, बॉलिंग हाँ, डाल दिया 10-10 ओवर, ही गोज थिंग, ऑस्ट्रेलिया के 3 वनडेज क्या करते फिर? बिठाऊंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा। मैं ठीक है, नहीं ओके। खिलाऊंगा, मैं उसको फोम रोलर पे बिठा के रोटी कैसे मलते जाऊंगा, उसकी पीठ सही करते रहूंगा। बिकॉज नहीं देख लो, मैं, आप देख लो, मेरा इतना ही है, एक साल के बाद जब बंदा ऐसा डाल पा रहा है, मतलब ही इज समवेयर डाउन द लाइन, ही वाज बॉलिंग नेट्स में रहने दो, एनसीए में रहने दो, कुछ तो कर रहा था बॉस। लाइक ऐसा तो नहीं था कि वो बैठा हुआ था। एक साल के बाद आप ऐसा नहीं डाल सकते, आप डाल ही नहीं सकते। आप लाइक आपका हाथ कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा होगा, या तो सिमुलेशन में डाल रहा होगा, या तो अपने पास कौन सा था वो, अपन जाके बॉलिंग करते थे और सिम्युलेटर रहता था, देखो वो कौन सा की मैं हाँ। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रेस्ट करना बेटर है फॉर बुमराह, एज मच एज टाइम ही कैन गेट। डोंट overload his back immediately as soon as he comes back, which he's obviously going to do in the Asia Cup. वो तो गिवन है कि वो हर मैच खेलने वाला है एशिया कप में, इसलिए जिधर जिधर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप होल्ड करके रखो। अब अच्छा ये बताओ मेरे को, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल अगर दोनों स्क्वाड में आ गए, आप दोनों को खिलाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ? वी विल डू आवर प्रेडिक्टेड 11s टुमारो, विल डू इट थ्रू आउट द वीक व्हेन द स्क्वाड इज अनाउंस्ड टुमारो, बट आप मेरे को अभी अगर लाइक, बिकॉज ऐसा दिख रहा 17 है तो शायद इन लोग दोनों का नाम आएगा, अगर आया, आप ईशान किशन या संजू सैमसन को ड्रॉप करके आप उसमें केएल राहुल को कीपिंग कराएंगे और श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे? आप दोनों को खिलाएंगे, एक को बिठाएंगे, आप कैसा करेंगे, दोनों को रखेंगे? मैं केएल राहुल को इंडिया में छोड़ के आऊंगा। मैं केएल राहुल को नहीं खिलाऊंगा, बिकॉज केएल राहुल देखो बॉस, लाइक दो चीज है, एक तो कीपर उतना सॉलिड नहीं है, तो आई डोंट थिंक ही शुड बी कीपिंग। सेकंड थिंग, अगर आप देखो केएल राहुल इज इन कंपटीशन विद शुभमन गिल, रोहित शर्मा, हु आर 100% टू बी इन He's दिस not. टीम। He's not. शुभमन गिल, No, KL Rahul is not in competition with them. He's in competition with Surya Kumar and Sanju Samson या and बट Ishan Kishan.
इन द मिडिल ऑर्डर उन्हें खेला भाई, उन्हें वनडे खेला कर तो सही उन्हें है। 5 पे खेलेंगे, उन्हें ओपनिंग नहीं करेंगे। इट्स नॉट गोना बी लाइक द T20। अगर उन्हें 5 पे खेला तो फिर सिचुएशन ऐसी है कि भाई शाहिन शाह वहां से, शाहिन शाह आ रहा, वहां से नसीम शाह आ रहा। आप नहीं एक्सपेक्ट करो कि ये श्रीलंका का रन चेस होगा जहां पे आप 50-75 बॉल 100 बॉल में आप 50 रन मार सकते। तो सर तो आई आप आई किसको आई वुड खिलाएंगे वांट, फिर 5 मैं पे? अच्छा। खिलाऊंगा सूर्या कुमार को खिलाऊंगा। आई नो 50 ओवर रिकॉर्ड सही नहीं है, बट मेरे को एक ऐसा बंदा होना है जो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर सकता है, जो रिदम ब्रेक कर सकता है, जो पाकिस्तान के बॉलर्स का रिदम ब्रेक कर सकता है, वो सिर्फ सूर्या कुमार है इंडिया में राइट नाउ। व्हेन आई से रिदम ब्रेक कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग फॉर्म में है, आई एम सेइंग अगर शाहिन शाह दरारा एक एंड को, दूसरे एंड से सूर्य कुमार मार के फोड़ दे सकता। बट ये केएल राहुल में और प्रेशर शोक इन करेगा, और डरेगा, और डर के खेलेंगे। अगर कोई मार मार चमत्कार करने वाला है जैसे सूर्य कुमार है, जो बैगन में मिला देने वाला है, जो ऐसा आके बोलेगा नहीं बॉस मैं हूं बोल के अगर मारना शुरू कर दिया, फिर शाहिन शाह नसीम शाह बैकफुट पे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास श्रेयस अय्यर है, अगर आपके पास केएल राहुल है, अगर आपके पास संजू सैमसन है, और ऐसा सूर्य कुमार ऐसा प्लेयर नहीं है, तो पूरे पूरे डर के टुक 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 खेलेंगे, व्हिच विल गेट द अपर हैंड टू द बॉलर। यू नीड अ प्लेयर लाइक सूर्य तो कुमार। आपका कीपर कौन होएगा? ईशान किशन, बिकॉज ईशान किशन ईशान। राइट नाउ और आप देयर। खिलाएंगे किधर उसको? नंबर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू, एंड देन ईशान। 6। तो रवि शास्त्री क्या बोले मालूम? ही सेड मैं 5-6 पे ईशान को नहीं खिलाऊंगा, मगर मैं रोहित को 4 पे खिला के उसको ओपन कराऊंगा। वो भाई आप मुंबई इंडियंस में देख लो क्या हुआ था, T20 में नहीं खेल पाया। रोहित शर्मा इज अ गाय हु हैज टू ओपन। रोहित शर्मा अगर ओपन नहीं करेगा, आप ये समझ जाओ कि आप बीच में आके गड़ा रहने वाले। बिकॉज भाई बंदा 15 साल से खेल रहा, मैं मानता हूँ 10-12 साल से तो खेल रहा रोहित शर्मा, कहाँ खेल रहा ओपनिंग। आप एकदम से लाके उसको बीच ओवर में डाल के आप उसको 10 साल से तो ओपन कर रहा है उन्हें। आप उसको एंकर रोल नहीं दे सकते एकदम। आप ऐसा बोले तो आप सूर्य कुमार को आप ओपन करा नहीं कर रहे भाई। 10 साल से कोई रिदम में है ओपनिंग की, और जिस तरीके के स्टार्ट्स रोहित शर्मा दे सकता इंडिया को अगर देना बैठा तो, जैसा अपन 2019 वर्ल्ड कप में देखे, कोई नहीं दे सकता भाई उसको ऐसा। मैं क्या करूंगा मालूम? मैं अय्यर और राहुल दोनों को लेके जाऊंगा श्रीलंका अगर मैं सेलेक्टर हूं, बट आई वोंट प्ले देम बिकॉज द फर्स्ट गेम इज अगेंस्ट पाकिस्तान, राइट? दोनों इंजरी से आ रहे, 7-7 8-8 महीने, लाइक यू सेड ऑलरेडी कॉशियस खेलेंगे। उसके ऊपर दे वोंट बी इन फुल फ्लो, दे विल बी रस्टी इन माय ओपिनियन. But I don't think that's how Rohit Sharma is going to think. What I would do is I'd put them on the bench, and then if there's an injury or if there is a proper form issue with Ishan Kishan, Surya Kumar Yadav, I get these two in my team, and then I sort out. I play Rahul at 5, Iyer at 4, and I go with it. Okay. But what Rohit Sharma will be thinking is that, bhai, mere ko chahiye number 4. Shreyas Iyer is my number 4. I'm going to play him at 4. And if I play KL Rahul, it solves the issue of not playing Ishan Kishan and like adjusting my number and Virat Kohli's number, right? Because Ishan Kishan, if you see, his average is 80 open the batting. Middle order, yes, he's played for the Mumbai Indians, but for India, he hasn't done that well when playing the middle order. उसको उन्हें 200 मार के उसको क्यों बिठाए? Because शुभमन गिल and रोहित शर्मा वापस आए ओपनिंग कर रहे थे. तो I agree with you that you shouldn't disturb the opening pair, but then ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर मैं तो देखना चाह रहा हूँ, मगर मेरे हिसाब से रोहित शर्मा नहीं देखना चाह रहा उसको मिडिल ऑर्डर में. And I think he's going, and the way he has captained also in the past, जब बुमराह पे था dependency in place with dependency, I think he wants these players अब in एक his और team. चीज ये हो सकती है कि 15 स्क्वाड में ऑलरेडी ईयर एंड आपके केएल राहुल होंगे। ये जो एडिशनल 2 हैं, हो सकते हैं तिलक वर्मा, जिनको नंबर 4 के स्क्वाड के वजह से तिलक वर्मा शायद ऑलरेडी एक्स्ट्रा रिजर्व के जैसे जाएंगे, और दूसरे प्रोबेबली आपके प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फास्ट बॉलरों में Bro, I was impressed with them. So I think these 2 will be your additional boys that you've got. Shami, Siraj, Bumrah, शार्दुल ठाकुर, ये 4 आपके बॉलर हो गए। उसके बाद आपके पास जो है, बट आई थिंक केएल राहुल एंड अय्यर कहीं ना कहीं ऑलरेडी 15 में। 2 एडिशनल विल बी तिलक वर्मा एंड प्रसिद्ध कृष्णा. Yeah, Ibrahim Bhai is saying Ashwin will be in the squad. They have lost faith in Akshar and Chahal, as both have been expensive in ODI cricket recently. Don't be surprised if Ashwin is in the 11 ahead of Kuldeep to provide batting depth. I won't be surprised, but I will be very upset because, you're playing 50 overs in a certain manner. You're playing with the leg spinners. You're trying to play attacking cricket. You already have Ravindra Jadeja there, who's the orthodox spinner. I do not want to see another off spinner, getting into the team like that. Okay, fine. Even if he is, I would go with Akshar Patel because you backed him for 1 year in your ODIs. You took him to the West Indies twice. You took him, various places. He was in the squad against Sri Lanka at home, New Zealand at home. अभी आप जाके just because आपको एकदम से कुछ balance fit करना है, वो करना है, आप ये जुगाड़ी चीज है. Like, how we say, like, एकदम से you want to fix something quickly on the spot. It's not going to work, bro. Like, in my opinion. मेरे को ये नहीं होने वाला है, because अगर अश्विन का कहीं ना कहीं
लगता है कि अश्विन आने के चांसेस है बहुत, सीधा उसको या तो वेस्ट इंडीज में कहीं ना कहीं घुसाते थे या उसको आयरलैंड लेके जाते थे। तो अश्विन का दूर दूर तक मेरे को तो कोई क्षमता नहीं कि मगर फैज अश्विन रहेगा। मगर इसमें क्या, वेयर आई एम विद इब्राहिम भाई दैट ही माइट गेट इनटू द टीम इवन दो आई डू नॉट एग्री विद इट, इज बिकॉज़ टी20 वर्ल्ड कप में ही डिडंट प्ले एनी टी20, एकदम से उसको लेके आ गए थे एकदम वो से, वो और टाइम चहल पे को बिठा दिए थे, और वो उन्हें टाइम खेला ही नहीं टी20 इंडिया के लिए, एकदम से आ गया था उन्हें। देखिए वो टाइम पे एक अक्षर उभर के नहीं आया था, वॉशिंगटन सुंदर आई थिंक नहीं था, काफी लोग नहीं थे वो टाइम पे, तो अरे वो यार टाइम पे फैज, सेंस फैज तुम लास्ट वर्ल्ड कप देख लो टी20, उसमें तो अक्सर भी था, इसमें भी था, चाहल को बिठा के अश्विन को लेके चले गए भैया, और चाहल इतना अच्छा लेकिन वो कर रहा था आईपीएल में, अब और देखो और अब और अब आप मेरे देखो वो टी20 वर्ल्ड कप में फैज, जैम्पा अमेजिंग, शादाब अमेजिंग, राशिद अमेजिंग, पूरे लेग स्पिनर्स करे, आप अश्विन और जडेजा को खिला रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है यार। या वो तो देखो मैं अभी जिस तरीके से अजीत अगरकर जब से आया, द्रविड़ जब से आया, अब देव भी प्रॉब्ली, अब देखो सिमिलर माइंडसेट तो नहीं बनेगा। वेस्ट इंडीज के जितने भी लोग तौर पे गए मेरे को लग रहा है वही बंडल में से निकलेगा मेजोरिटी ऑफ द प्लॉट, जिसमें अगेन यू विल ऐड केएल राहुल एंड अय्यर टू द मिक्स, हैविंग ईशांत शर्मा, सो आई फील अय्यर, सॉरी अय्यर बोल रहा हूँ मैं, सूर्य कुमार, ईशान किशन, ये अपना कौन है, और दो संजू श्रेयस सैमसन। अय्यर, केएल राहुल, ये लग तो जाएंगे। स्पिनर में कुलदीप भाई तो देयर इज नो डाउट ही विल प्ले ब्रो, लाइक अगर उन्हें नहीं खेला तो दे विल बी अ फायर इन द बीसीसीआई ऑफिस, आई एम टेलिंग यू। रही बात अश्विन की, आई डू नॉट पर्सनली सी इट बिकॉज अश्विन हैज नॉट बीन इन एक्शन सिंस द डब्ल्यूटीसी, कहीं ना उसका नाम नहीं है ना कुछ नहीं है ना क्या है, अरे यार। अरे कोई बात नहीं, फैज जुड़ जाएंगे हमारे साथ, बट या वो यही बात हो रही कि अश्विन अगर आया तो एकदम से आएगा, इट वोंट बी फेयर ऑन द अदर bowlers who have been playing for the last year or so, and we've already seen with the past with Ashwin and with the other players ki bhai, like with Ashwin in particular, when he comes in for a world tournament, it's not really suiting India's case. They need a leg spinner there. You already have an off spinner, orthodox spinner who takes the ball away from the right handers in Jadeja. So I think you need somebody like, for example, a Chahal in the team. Even Ravi Bishnoi I'll take because he's an aggressive bowler. Yeah, he's young. He doesn't he bowls a lot of googlies. Not maybe doesn't bowl as much leg spin, but I would still take him over Ashwin. I just want attacking bowlers, and मेरे हिसाब से चहल को लेके जाना चाहिए. He's played in these Indian conditions for so long. He IPL में उन्हें RCB के लिए कितने बार चिन्नस्वामी में खेला, छोटे ग्राउंड पे, he's taken wickets over there. तो चहल को तो लेना चाहिए भाई स्क्वाड में. I think you need 2 leg spinners. You take Jadeja there, and then if you need a 4th spinner, you keep in, because it's a 17-man squad, you can put in Aksar. I have no problem with that. Aksar Patel को ले लेना चाहिए. But let's see what happens tomorrow. Tomorrow is going to be the selection for this team, Asia Cup and World Cup. I think Indian time 1:30, like Ibrahim Bhai said. So keep your alarms on. It's going to be a big announcement. I'm sure there'll be 2-3 decisions that we're not sure about, but again, I'm not 100% confident already going into this World Cup, into the Asia Cup. Bumrah gives me extra confidence, but in particular, you see like the problems that's been happening with the batting order, the problems with the bowling attack. You're too dependent on certain players. There's injuries. You don't have backups. Because of a lack of all-rounders, you don't have that balance in the team. You see other teams, they have leg spinners who can bat. We don't have that. You have more than one all-rounder. We don't have that. And अश्विन शायद आ जाएगा, लाइट चली गई थी एकदम से, तो क्या बोल सकते हैं। नहीं भाई अश्विन तो नहीं यार, अगर आया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा यार, पूरा मेथोडोलॉजी, पूरा जो रिदम चल रहा पुट्टों का, यंगस्टर्स का जो लाने का, जनरेशनल चेंज होने का जो इम्प्लीकेशन दिख रहा थोड़ा यहाँ पे द्रविड़ और रोहित शर्मा और इनों के साथ। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, सुंदर को ले लो उसके जगह में, सुंदर को ले लो जगह में उसके, मैं तो वो बिश्नोई को ले ले हो ऐसे अच्छा। आई थिंक सुंदर तो no, because I'll tell you why. बैटिंग कर सकता है yeah, and I would ideally go with अक्षर पटेल. अगर नहीं है तो अगर आपको नहीं होना अक्षर पटेल, तो आप वाशिंगटन सुंदर जाओ, आप अश्विन के पास मत जाओ। मेरे हिसाब से मेरे पास कोई दुश्मनी नहीं है ना कुछ ऐसा है. Ashwin is a very nice guy, he's a very good guy, he's a proper cricketer as well, he's done so well for India, I respect him, but going into this World Cup, bro, you need aggressive bowlers. Also field में liability होने, right? Exactly. दूसरी चीज ठीक है, उन्हें थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता, मगर आप ट्राई कर चुके हैं, ये it doesn't really work. It's like a जुगाड़ kind of thing. It's a quick fix which is not going to help you in the long term. एक चीज जो उन लोगों का दिमाग चेंज बहुत ज्यादा कर सकती है, which I hope not, जो वनिंदु हसरंगा परफॉर्मेंस है LPL में, और एक स्पिनर he got about like what 10 12 15 wickets in the tournament. तो वो पिचेस के हिसाब से अगर उन्हें सोचने वाले पे, कुलदीप यादव तो श्योर शॉट है उसका, तो मगर हसरंगा तो लेग स्पिनर है नहीं। हाँ, अब वही है, लेग स्पिनर है बोल के, that's why I would back Ravi Bishnoi to come in as well.
अब अश्विन लेग स्पिन तो डालता नहीं है, वो सिचुएशन, बट ही कैन स्टिल गेट इट टू टर्न हियर एंड देयर. सिंपल है भाई, आप चाहल और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा, ये 4 स्पिनर को रखो आप. बेशक आप अक्षर को 16th या 17th प्लेयर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये 3 स्पिनर जाना चाहिए उसका. या तो आप अक्सर को दिमाग में ये लगा के चलो कि भाई ये प्योर बैट्समैन है, इसको बॉलिंग नहीं आती, आप बॉलिंग नहीं देने वाले, इसको कोई बात नहीं, इट विल ऐड टू योर टेल, कोई बात नहीं, दैट डजंट मेक अ, बट यू डू नॉट ब्रिंग अप अश्विन जस्ट बिकॉज़ ही कैन, फॉर द फैक्ट दैट ही कैन बॉल. यू हैव इनफ बॉलिंग भाई, you have 3 pacemen, then you'll have Kuldeep Yadav, you'll have Jadeja. You can get an over or two again if you need from someone somewhere else. I mean, Shardul Thakur अगर in the squad है तो he'll be an additional batsman as well. But again, pitch and conditions के हिसाब से आपको pick करना पड़ेगा. रविंद्र चाहल दोनों, अगर बस चाहल needs to really work on his bowling, that I agree with as well, but it doesn't give the fact कि भाई. Yeah, but Chahal, like we've seen also, like in the Chinnaswamy, we've seen him in grounds in India. He's done well, even on flat tracks or small grounds. He's picked up wickets. He's been aggressive, and yeah, I would still like to see Chahal in the team. When it comes to Singh, Sundar and Bishnoi in the Asian Games, so it's unlikely. Yeah, it is unlikely. But then you go with Akshar Patel. I think that's what I would do. I don't think I would go back to Ashwin. That is just the point that I am making. Yeah, Ashwin अगर वापस चलेगा, then like you understand where Indian cricket is not gonna still change with the likes of these Aziz Agar. It will be the same. I don't know what, it won't happen. I just have a strong sense that it won't happen. I'm telling you, I'll see Surya Kumar. I will see. तो चार पे सूर्या खिलाएंगे आप? मैं तो खिला तो भाई सूर्या होना, भाई सूर्या जैसा प्लेयर नहीं मिला तो 6 पे नहीं खिलाएंगे, कहीं भी खिलाओ, बस खिलाओ बस. 4 पे किसको खिलाना है ये बताओ. 4 पे देखो बॉस, या तो संजू खिला लो, बिकॉज़ संजू कैन होल्ड द फोर्ट, पर संजू जिस तरीके से आउट हो रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है उससे. बट संजू कैन नंबर 5. हां, श्रेयस अय्यर अगेन ही प्लेज टू वेज, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है, शॉर्ट पिच डिलीवरी. अगर शॉर्ट पिच उन्हें मुकम्मल कर लिया तो मसला नहीं है. इंडिया में फिर भी ठीक हो सकता वो. लंका का बोल नहीं सकते ना भाई, लंका का तो लंका भी लाइक आई मीन सब कॉन्टिनेंट बोल रहा हूं, इट वोंट बी एज बाउंसी, राइट? कहीं ना कहीं से तो निकाल लेंगे, कहीं कुछ तो भी. बट see, ideally Shubman Gill, Rohit Sharma, Virat Kohli. Then I would probably say Sanju Samson. Then I would bring Surya at 5, Ishan at 6, Jadeja at 7. हार्दिक कहाँ है भाई? अरे हार्दिक का तो भूल गया यार. हार्दिक भी है ना यार. चलो देखो, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल. ओके, विराट कोहली नंबर 3. नंबर 4 अभी लेट्स, it's a tough one bro. Like okay, let's say player आप भूल जा रहा हूं मैं. तिलक वर्मा / श्रेयस अय्यर / संजू सैमसन. ठीक है, ये आपके 4 हो गया. 5 हार्दिक पांड्या, 6 पे सूर्या कुमार, ओके, 7 पे रविंद्र जडेजा, फिर 4 आपके बॉलर्स कुलदीप यादव, सिराज, बुमराह, शमी. बैंग. मैं तो भूल भी गया यार उसको, हार्दिक पांड्या को तो भूल भी गया भाई. सोचो भाई, हार्दिक पांड्या ही प्लेयर है. एंड दैट्स अनदर थिंग, like मैं क्या बोला, सक्सेस ऑफ इंडिया विल डिपेंड ऑन ओनली वन गाय मैन. इट विल बी हार्दिक पांड्या. इट विल बी द मोस्ट क्रूशियल गाय. That's where we get screwed. We always depend on one guy, whereas you see other teams, they just they come as a squad and they think now it's so dependent on Bumrah, we're dependent on Hardik. That is the problem. We need backups. We need a Shivam Dube to come and smash. We need people to take accountability. Now accountability लेने वाले भी कोई नहीं. अब देखो, Ben Stokes अगर खेलेगा, he's going to play as a batsman. He's not going to play as all rounder. But then they have Sam Curran, they have Wokes, they have these guys who can bat and bowl. They have options. लिविंगस्टोन कैन बैट एंड बॉल. वो बंदे भी परफॉर्म करते जब जरूरत रहती. अपने बंदे बायलैटरल में परफॉर्म करते, बट आईसीसी में एक आध दो निकल के उभर के आते. Another very interesting point that Ravi Shastri said, he was there he was the coach in the 2019 World Cup. He said the biggest miss for us in the semi-final was Shikhar Dhawan. Shikhar Dhawan was smashing it in that World Cup. He was in prime form. He's the most underrated player in the Indian team. He takes pressure off Rohit Sharma and also gets the best out of Rohit Sharma. That left hand right hand combination was helping India, and because he was not there against Trent Bolt, it gave Trent Bolt and the New Zealand bowlers a line length to settle in. So I felt that was a very valid point as well. That left hand right hand kind of thing. But even if you don't have an opener in the as a left-hander, you need someone there in the top 5, top 6 who can bat left-handed. That's where Ishan Kishan probably I would like. I know people will say Jadeja को खिलाओ 4 पे ये वो, but I don't think that would work. नहीं भाई, जडेजा बेचारा नहीं, अब नहीं होता. जडेजा से एक आध इनिंग सीखेंगे आपको जडेजा से, but नहीं जडेजा. No, because he's done so well as a finisher. Keep him as a finisher in my opinion. I mean, he doesn't have a long innings in him left. I think वो हिसाब से मैं नहीं देख सकता उसको.
And yeah, it's a Nihal Gore in a situation where you need a 10 and over. I'd prefer Aksar. Yeah, man, he can at least. We've seen that chase that he did with what it, Sri Lanka or New Zealand, one of those games. Sri Yeah, Lanka. even last year against West Uh, Indies, he with was superb, Washington man. Sundar, I think him and Washington Sundar or someone over Surya or Washington Sundar. But one of them, he was superb, and yeah, he can bat quicker. But yeah, bowling थोड़ी dodgy है. But Quicker. if he's getting it to skid, then I think जडेजा के साथ लड़ा उन्हें बैठना थोड़े टाइम पे बैठ के समझना भाई तेरा आम बॉल ऐसा डालो ये करो वो करो. बॉलर कौन है देखो तीन तो अगर बुमराह फिट है तो आई मीन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट है उन्हें तो बुमराह शमी और सिराज है अभी आप Yeah. एक्स्ट्रा दो बॉलर लेके जाएंगे एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा लेके जाएंगे आप एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा बिकॉज अगर डेप्थ टेल का रोना शुरू करे तो देन शार्दुल ठाकुर विल कम इन एनीवे. तो योर फोर्थ बॉलर है शार्दुल ठाकुर. Yeah, depending. So again, you're assuming that because it's in the subcontinent everything you need that extra spinner so you're playing one fast bowler less. yeah, That's what yeah, you're doing. You're going with extra batter. extra What batter. what if we drop an extra batter and go with an extra fast bowler like a Prasidh Krishna and a Shardul Thakur, and you drop like a Samson? Ooh, that's gonna cause chaos and बहुत chaos. रिस्की हो जाएगा बस वो तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा बिकॉज अगर ऊपर के तीन जो अपने का यूजुअल सस्पेक्ट्स है नहीं चलने वाले कभी कभी नहीं चले तो फिर पिंडे में ये भी है कि वर्ल्ड कप इंडिया में है अगर फास्ट बॉलर को इंजरी हुई तो आप लेके आ सकते हैं किसी को ये भी हो सकता. एंड अभी तो एशिया कप का ही देखेंगे उसके बाद इंडिया सोचेंगे एशिया कप भी लाइक अगर कोई इंजर हुआ तो इंडिया श्रीलंका कितनी दूर है भाई इंडिया से उतनी दूर है नहीं तो यू कैन सेंड अ बैकअप रिप्लेसमेंट. दे माइट टेक अ रिजर्व फास्ट बॉलर बट I guess you're right in that sense. Maybe you go with 4 fast bowlers and play 3. Sometimes there will be games where India might play 2 fast bowlers. Hardik Pandya as the third seamer. या अरे हार्दिक पांड्या भूल जा रहे यार अपन. मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे को मालूम है उन्हें है स्क्वाड में टीम में है वो तो नहीं तो नहीं चाहिए मैंने वो he has to perform man he has to perform this game. But yeah, yes. from this Ireland tour तो देखो भाई it's good to see कि रिंकू सिंह का टोपी मिल गया ऋतुराज अच्छा खेल लिया एशियन गेम्स की टीम अच्छी स्ट्रांग बिल्ड हुई है अर्शदीप थोड़ा बहुत डिसेंट कर लिया प्रसिद्ध एंड बुमराह इंप्रेसिव थे. Ireland not to the best of ability. I don't think they played full tempo. I know the first T20 थोड़ा unfortunate था उन लोगों के लिए. बारिश हो गई थी DRS से हार गए थे whatever. But I think second में तो again they made a few mistakes. They thought it would be like the first one. They decided to field, but India अच्छा फोड़ दिया उन लोगों को. Yeah, I think also top order उतनी नहीं चली उन लोगों की. Balbirnie batted really well today, but in the first inning match that was the issue, and today bowling thoda sa pitke, but I think the way they came back with the ball that was very impressive. Certain bits they were impressive, and hopefully they get to play more cricket and become more competitive because Ireland does have potential. It's just that they need to play more competitive cricket, more series like that. There's also Fez the Pakistan Afghanistan series starting as well, right? In a couple days, Tuesday को शुरू हो रहा है. That will also give us a good indicator because that's happening in Sri Lanka. तो वो देखना पड़ेगा अच्छे नजर से because दोनों तो like they're going to be in the Asia Cup and World Cup, and it'll be interesting to see how they're shaping up, how they're forming their team as well. I'm sure other teams will be watching this series as well and keeping a close eye. 100%. And पाकिस्तान जिस तरीके से ऑलरेडी मेजॉरिटी क्या एटलीस्ट 3 से 4-5 लोग तो ऑलरेडी वहीं खेल रहे थे. They have an idea कि क्या चल रहा वहाँ मैं तुम्हारे को एक रील भेजा कल मेरे को बेस्ट रील दिखा पूरा लाइक साल का नहीं वो जो मोस्ट हैंडसम बॉयज बोल के पूरे आते पर लाइक से रिजवान लोग क्रेजी था बट या सॉरी यू से तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान have been doing decent and I think expectations will be high from Pakistan. They perform and probably win this Asia Cup because they've been in Sri Lanka for quite some time. They're playing just before the risk बोल सकते कि भाई you want to risk Shine and these guys just before the Asia Cup. But I think it's obviously going to be a good practice game for them to get in rhythm of the game. तो मेरे हिसाब से in the country where it's been performed, like जहाँ host हो रहा है Asia Cup, वो हिसाब से तो होशियार है पाकिस्तान कर रहे हैं. I'm interested to see like how Pakistan will play as well in the 50 overs because of T20 में तो हमारे को मालूम लग जबरदस्त खेले. But any format, Pakistan, the thing is one day they will get smashed, one day they will smash. So we don't know exactly what Pakistan will show up, right? But the balance that they have in the team, that is the most scary thing. Like the impeccable balance जो है वो शादाब जो लाके दे रहा, इफ्तिखार जो आके दे रहा, 100%. मगर मेरा पॉइंट क्या है मालूम? लास्ट वर्ल्ड कप जो T20 था उसमें भी बैलेंस यही थी. मगर आप बाल नेदरलैंड्स की वजह से आप आए सेमीफाइनल्स में राइट लाइक बच गए थे
Like, so that's the thing. Zimbabwe se हार गए, for example. आप इंडिया को मारते मारते हार गए. So that is the thing. Like, फिर South Africa, they killed it in the semi-final against New Zealand. They were amazing. It's still an inconsistent team, but on paper, yes, I agree with you 100%. They look solid. They're an entertaining team, very talented team. But yeah, we don't know which Pakistan will show up. That's the thing. In the Asia Cup and World Cup, this is the thing we'll have to wait for. अब एक चीज आप नजरअंदाज ये करें कि भाई वो वर्ल्ड कप में शाहीन फुल टिल्ट पे था नहीं. अगर नहीं शाहीन अब था. फुल टिल्ट पे आ गया भाई, और अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल गया उसको फर्स्ट ओवर में, तो आप देख लो भाई एक आध विकेट तो बिल्कुल. एज शुभमन गिल हगलेगा, केएल राहुल अगर ओपन करा उन्हें हग लेता. थोड़ा मूवमेंट भी अगर लोगों को मिला तो भाई मजाक नहीं. आई एम जस्ट might be sounding anti-Indian, but I'm not. I love India, but these are the issues that we've seen with India. कि भाई थोड़ा भी hint of any opposition, man. Shaheen bowling at full tilt is incredible, bro. I saw him अभी live आप here. 100 पे देख लो. आप 100 के फर्स्ट ओवर में 2 विकेट उखाड़ लिया था as soon as he entered the 100. तो that's what this guy brings. 140, 146, नसीम शाह 144. ना थकते नहीं, यंग बच्चे पूरे 22 to 18 के, तो उन लोगों को आप 12-15 ओवर भी दो तो ना डालने रेडी रहते. उसके बाद आपके पास शादाब जैसे लेग स्पिनर है जो बैटिंग कर सकता. आपके पास वसीम जूनियर, हारिस रफ, अगेन 140-50 टच करने वाले दोनों बॉलर हैं, एंड दे हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस इन दैट. आई एम प्रीटी श्योर विराट कोहली को देख के हारिस रफ को थोड़ा यादें ताजे हो जाएंगे, बट ही विल बी मोर पम्प्ड अप टू शो व्हाट हिज क्वालिटी इज, यू नो, after that failure in Melbourne. But I'm pretty sure उन्हें all gun playing. Then you have Babar who's, you know, batting sensationally. You've got Rizwan who can bat 6 also, who can open also. Fakhar Zaman giving you the left hand option. Abdullah Shafiq, good test batsman. You've got the क्या बोलते हैं anchors in Saud Shakil and Aga Salman who can also come and contribute. तो भाई all over ये team बहुत solid है पेपर पे. केमिस्ट्री थोड़ी हो सकता है, आप यू नो प्रॉब्लम है. एंड उसामा मीर भी है, याश इब्राहिम. उसामा मीर आल्सो फैंटास्टिक लेग स्पिनर. तो मेरे हिसाब से या दे गुड, बट इट्स जस्ट द क्लिकेबिलिटी देखना पड़ेगा बिकॉज़ दे हैव नॉट प्लेड वेरी मच टुगेदर इन दिस फॉर्मेट. अफगानिस्तान का कैप्टन कौन है? वो तो हर 2 मिनट चेंज होता. राशिद खान होना तो चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज़ राशिद खान हैड गॉन टू क्या बोलते, he was playing somewhere else, then he came back and then it was yes, Usama Mir Ibrahim bhai had a sensational innings with the bat for the Manchester Originals a couple of weeks ago. I remember watching that, and he took them out of a very tricky situation, I think, with Jimmy Overton. That was a very good partnership. So yeah, he's bowling well. He's picking up wickets in the 100 too, so he is a good option. What are your thoughts on UAE against win against New Zealand? It was sensational. I felt the first game they should have won too. They've been playing really well in this series. You know, Tim Southee picked up a fifer and made it difficult for UAE in that first T20, but they were on course of winning that too. And yeah, overall they've been very impressive in this series, and it's good to see. It's good to see New Zealand coming here in Dubai and playing against UAE, and hopefully there'll be more associate nations playing. We know that the next T20 World Cup is going to be a big one with a lot of teams participating, and they're only going to improve if they play against best of the best. It might seem boring, it might be a bilateral series you don't want to watch. I completely agree, but it's important for these associate nations to play these series so that they improve day after day. Rashid Khan is, I think it's Hasmatullah Shahidi who was the captain for Afghanistan ODI. The opener. What about Hazratullah? Hazratullah so gaya Nizamuddin. Zaza is not there. Hazratullah is there. He's there. Is he? ऐसे शौक मत दो उन्हें, जबरदस्त है, मेरे को पसंद है. और उन्हें कौन है यार? इब्राहिम Sardan, उन्हें भी जबरदस्त प्लेयर है. They have some good batting there, and bro, in these conditions, 10 overs, Rashid, Mujib, I don't know if Nabi's in the squad, but yes, Nabi's in the squad. So Nabi's also there. Asmatullah Shahidi, Abdur Rahman, Amatullah Umar Zai, Fatullah Farooqi, Ibrahim Sardan, Ikram Akhil, Muhammad Nabi, Mujibur Rahman, Najibul Sadran, Noor Ahmad, Rahmatullah Gurbaz, Noor Ahmad. भाई फैज अभी आप इमेजिन करो बॉल टर्न हो रहा in Lucknow. Afghanistan is playing any team. You have Noor Ahmad, Rashid Khan, Mohammad Nabi, Mujib bowling 10 overs. It could be very tricky for the opposition, especially the teams coming from the Sena countries. It could be very challenging. I think it was Ibrahim who told us that Lucknow का जो pitch है वो क्या बोलते हैं? I'll only believe it when I see it, prof. I only believe it when I see it. We'll have to see what happens. अभी देखिए मैं तो लखनऊ तक जाना, मैं तो लखनऊ भी नहीं जाना चाह रहा. मैं तो अभी सिर्फ श्रीलंका जाना चाह रहा हूँ देखने. मतलब श्रीलंका भी अगर आप ले लो, there is spin friendly conditions. आप देखो श्रीलंका में in the past, yeah, तो like आप कहीं भी ले लो, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, it will suit the spinners, it will suit the turn. तो
I think Afghanistan can be dangerous, man. I always say that in before every I always tournament. say that as well. But I think they've lost a few close games in the previous Asia Cup, in the World Cup before this, particularly against Pakistan, and I hope that they've learned from that with a calm head and cover those mistakes. इतना बहुत जज्बाती हो जाते हैं उन लोग. If they just play with their talent and keep calm in pressure situations, I think they can get over the line against big teams like India and Pakistan too. बिल्कुल आई थिंक अफगानिस्तान इज वन हु कैन बी अ स्पॉइल स्पोर्ट फॉर एनी टीम ऑन एनी अगर अपने पे आगे प्रॉब्लम है अफगानिस्तान हैज बीन के कभी कभी टॉप ऑर्डर नहीं चलती उन लोगों की बहुत बुरा तीन चार फिर बीच में जजाई एंड इन लोगों को पूरा बिल्ड करना पड़ता फिर बाय दैट टाइम प्रेशर ऐड होके फिर आउट हो जाते फिर थोड़ा बहुत राशिद खान ना स्क्रिमेज अगर उन लोग की टॉप ऑर्डर बैट करना शुरू कर दी दे गेट टू अ गुड 80 90 सॉलिड स्टार्ट बीच वाले अच्छे हैं दे विल बी एबल टू एंकर इट अराउंड then the bowling also has been decent from Afghanistan, but the spin quality is the best. I think they have amazing spinners. They have people High who know the quality, mate. back of the High hand. मालूम है India तो भाई रटा हुआ है पूरों को and Sri Lanka as well. I'm Yeah. pretty sure. So yeah, they're going to be a very and again like we always say Nepal, Afghanistan ऐसे टीमों को जब कुछ हारने के लिए नहीं रहता, it becomes more dangerous. इनला एक्सपेरिमेंट करने को फ्री रह सकते कुछ भी कर सकते हैं ना जाना कि इंडिया पाकिस्तान इन लोगों को जरा एक रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए खेलना पड़ता बट अफगानिस्तान एंड नेपाल सिंस देयर अपकमिंग नेशंस दे स्टिल हैव द फ्रीडम टू express themselves freely. The only thing is in pressure situations they like उन लोग दे देते हैं मैच को 2019 वर्ल्ड कप आप पाकिस्तान का मैच ले लो अब एशिया कप दूसरे T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के मैचेस इन पर्टिकुलर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज उसमें ज्यादा इमोशन रहता स्लेजिंग चलती ये चलता क्राउड में भी लड़ाइयाँ चलते in those situations if the players just keep the calm and just stick to their basics they can win the game man because I went to like 2 or 3 matches live in the stadium and I felt they had the game in the bag and they just threw it and that's where experience comes into play and just calmness like composure that's what you need and I think that's where these kind of teams lack in terms of talent there's no lack they have batsmen they have fast उन्हें अपना एक bowler है भाई वो फजल फारूकी अपना सनराइजर्स का है नहीं तो he's also experienced he's played tournaments across the world so I'm positive about them but it's just about keeping composure. Yeah, 100%. Lucknow pitch is going to be totally I'll only believe it when I see it bro I only believe it when I see it only when I see I'll believe it so let's see what happens. Seeing is believing it here, but yeah, it's going to be totally fresh. So it plays. No, but yes, Ibrahim, I take your point into consideration, but I'm just saying, देखना पड़ेगा because अभी हमारा like her mind has been brainwashed with only spin at the Kana Stadium. The first game in World Cup is played there. Yeah, what a venue to play. लखनऊ में आके खेले यार crowd भी नहीं आ रहा था IPL के टाइम लखनऊ. I thought अहमदाबाद में पहला मैच नहीं. अहमदाबाद में first match. Yeah. We will only know the first game in the World Cup is played there. Okay, ठीक है मैं समझ गया. बढ़िया हमें कल 130 काफी सवालों के जवाब आएंगे काफी प्रॉब्ली फ्रस्ट्रेशन आएंगे काफी समझ आउट ऑफ द बॉक्स देखेंगे थोड़े पिक्स मेरे को तो लग रहा कि भाई समझ के बाहर है बट दे आर ओनली देयर टू बैक अप केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर इज व्हाट आई फील एंड वन विल बी अ बैकअप टू जसप्रीत बुमराह आई थिंक सो आई थिंक वो हिसाब से दे आर गोना स्कैम मेक दिस टीम एंड you have your probables would be most probably will be playing Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Kuldeep Yadav, Shami, Siraj, Bumrah. ये तो आपके पक्के प्लेयर आए हैं अब उसके अलावा कौन खेलने वाला है it's going to be new Dravid roulette and Rohit Sharma roulette कौन खेलने वाला है बिल्कुल उनकी किस्मत से so मजा तो आने वाला है भाई कल 130 बैठ के पूरे रेडी रहने वाले कैमरा and it's going to be a press conference first time कितने की सालों के बाद कोई आके जरूरी है भाई तो फिर सवाल के जवाब देंगे उन लोग नहीं देते अपने वाले पूछते भी नहीं वो टाइम पे बाद में आके सबको याद आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखना क्या फायदा है रखना हमें पूछने तो वाले बट अगेन हार्ड क्रंचिंग सवाल इग्नोर करके भाग जाएंगे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा. I'm really excited for it. Tomorrow we will be live. We'll react to that. We'll also come back hopefully in the evening and do a predicted 11 as well for that Indian team. We'll see how they match up against the other teams in the Asia Cup and the World Cup also. मैं England का team देख रहा था. ओहो क्या दिख रही है वो मगर again conditions will be different. England play high risk cricket, so there's no guarantee that they will win with that team. But it's going to be entertaining to watch them. With India, I still feel that India will probably make semi-finals. They do have a lot of talented players there. But उससे आगे जाना, it will depend on a lot. Again, let's see what happens. There will be pressure. I know आप home पे खेल रहे हैं, मगर pressure double रहता जब आप home पे खेलेंगे. And particularly on the problem देखो फर्क क्या है. England will play with a temperament that they don't
care if they win or not win the World Cup. They're just going to go out and entertain. India has to win the World Cup because after 12 years, it's in their country and they have all the spotlight in them. ICC T20 हक दी है, 2019 एशिया कप हक दी है, सॉरी वर्ल्ड कप हक दी है, फिर उसके बाद एशिया कप भी हक दी है. तो इंडिया के ऊपर स्पॉटलाइट भी सेव करता है. नेशन वाइज द क्वालिटी दैट दे हैव इन देयर टीम राइट नाउ इज नेक्स्ट टू नो वन. But I don't agree with that. I mean, we will not agree with it, but it's the point is like you have to be. India free thought से खेलेंगे नहीं. इंडिया के साथ प्रेशर है, बिलियन लोगों का प्रेशर है. तो yeah, did you see Archer was bowling left-handed Yes. in nets? Yeah, I saw that. I saw him bowling left-handed in nets. पहले right why hand made से the तो डालो comment? उसको. पहले right hand से तो डालो, left hand से कहीं डालो. I saw that. Oh, Archer का मैं बोला था नहीं आपको, like it was very unfortunate, man. That fish tank thing, bro, like it screwed his whole career. Like, and then he has back injuries too and everything. It's unfortunate, but I would love to see him play, man. He's a proper bowler. They still have other bowlers, so they're not only dependent on him. Like we're very dependent on Bumrah right now. They have Mark Wood coming in. They have other bowlers coming in. So I don't think Sam Curran has been sensational for them. So मेरे हिसाब से I think England are a bit more sorted. But like I said, they play very aggressive cricket, high risk cricket that there's no guarantee that they will win. But it will be entertaining for sure. And अगर लग गए उन लोग के तो फिर कोई भी नहीं रोकेगा उनको. Exactly. वही तो है ना भाई. 50 ओवर में 90 ओवर में जिस तरीके से खेल रहे थे टेस्ट मैच में, 50 ओवर में तो इन 2x खेलने वाले भाई, और जल्दी खेलने वाले. हम लोग आयरलैंड का तो मेंशन कर लिए, मगर आप लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप देख लो. दैट इज द एग्जांपल हाउ इंग्लैंड प्ले. दे बीट इंडिया. They beat India, they thrashed South Africa, they thrashed New Zealand, but then they lost to Australia in the group stages, they lost to Pakistan, and they lost to Sri Lanka. Sri Lanka, and they were chasing 220. No one expected that they were going to lose to Sri Lanka. Malinga came crazy death overs. But that is how England play, bro. They will lose to like Afghanistan, then they'll come and beat India. That's how they're going to play the cricket. It'll make it fun. Make it exciting. But I think that's the way to go in a way. Like you gotta play aggressive. If you lose playing like that, it's okay, because if you play cautious, you might reach the semi-final. But then आगे आपका क्या X factor है which will take you forward. And that's why me and Fez want Surya Kumar in the team, because we want to see an X factor. We want to see that gamble being played, prof. Yeah, at least one out of 10, 6, 7 players is fine. You can take that gamble. And again, Surya Kumar also has to match up to the task. I know his portfolio is not the best. आप देखे तो लड़के के बोलते ना, वो लड़का जब शादी के लिए देखते हो लड़के का क्वालिफिकेशन क्या उतना अच्छा नहीं दिख रहा सूर्या कुमार का. आई नो कि उसके नंबर सही नहीं रहे. 48th ओवर 35th ओवर को ला लो सूर्या कुमार को और बोल दो बॉस ये T20 का गेम है, तू खेल, तू जैसा खेलता. उन्हें लेट के बैठ के उठा के अगर खेलना शुरू कर दिया भाई, वैसा फिनिशर और वैसा नहीं मिलेगा आपको फिर. Yeah, I think that pretty much wraps it up, Fez. It was a very good discussion. Really enjoyed it. Good to have your thoughts as well. Tomorrow again we'll be going live. We'll be reacting to the team. We'll have some shorts coming for you as well, and then we'll also try to in the evening try to get our playing 11 for that. A lot to talk about, and yeah, looking forward to it. Any last thoughts? लास्ट थॉट्स यही है कि भाई कल 1:30 के बाद मेरा दिमाग कैसा चलने वाला आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट देखो भाई एंजाइटी इसलिए हो रही है 11 के 15 7 भाई आपको मालूम नहीं क्या होना है, बिकॉज़ ये टीम you don't know what's going to happen. It's like such an unpredictable board, firstly, and then secondly, all the players are not on full tilt. Like they're not performing as consistently as you would want them. You've seen patches of every player right now, from all the way till Virat Kohli and Rohit Sharma. You've just seen patches. You've not seen this team click as a unit in any game. So it's going to be fun to see them going into Asia Cup. But yeah, I just also knowing कि 17 would give you a hint. थोड़ा बहुत आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप के बारे में क्या सोच रहे, कैसा वही टीम उनकी लग आने वाली है. That's why I think they've taken those extra few days to announce this Asia Cup squad, whereas everybody else have announced their teams apart from Sri Lanka, I think. But it should be a very similar team. It's like a World Cup draft basically. This was just a wait till Bumrah and Prasidh Krishna maybe show there, and maybe also Iyer and the Rahul are playing practice games, right? Today there was a game too as well. So that's the reason that they've been delaying it. Yeah, let's see what happens tomorrow. Looking forward to it. I will enjoy it. Whatever happens, there'll be plenty of arguments, discussions. It'll be heated debates. I'm looking forward to it, and I'm very excited. End of the day, it's we're in a World Cup year. We're only 1.5 months away from the World Cup. Before that, we have an Asia Cup. This is like Disneyland for cricket lovers. So make sure you like, subscribe to the channel, and we'll bring you the latest from the cricketing world. Hopefully, Faz, thank you so much for joining me. Thank you everyone else, Ibrahim Bhai, and everyone else, Nihal as well, who have watched this. And we will catch you guys tomorrow. Take care and have a lovely night.